हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को एनसीईआरटी का देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चेंजेज इन द क्लासिफिकेशन मेथड ओवर द टाइम। तो इसका आंसर लिखिएगा, Since the beginning of civilization, man has made several attempts to classify living beings. These attempts at classification were based on our needs for using items of general utility such as food, clothing, and shelter, based on institution rather than the scientific criteria. The first attempt at classification was made by Aristotle, but with the time, the classification of organisms also changed because new information was obtained every day. Many hidden mysteries were revealed, new characteristics were identified. Due to all this, to make classification simple and easy, Linnaeus developed a two-kingdom method of classification, in which they were classified into Plantae and Animalia, respectively. Later in 1969, five kingdom classification system was proposed by R.H. Whitaker, which is called Monera, Protista, Plantae, फंगी। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है आपका, फंगी है यहाँ पे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोबैक्टीरिया। तो इसका आंसर लिखिएगा, सबसे पहले टू यूजेज ऑफ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का, फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सेकेंड इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंड टू यूजेज ऑफ प्रोटोबैक्टीरिया दैट इज फर्स्ट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन दैट मीन्स बायोगैस फ्रॉम काउ डंग, और एंड सेकेंड डाइजेस्टिंग फूड इन द इंटेस्टाइन of ruminant animals that is cow and buffalo. Next question है, what are the characteristics of the cell wall of a diatom? इसका आंसर लिखिएगा, the cell wall diatom from two overlapping cells in the same way as a soap dish. These walls contain silica due to which they do not get destroyed. As a result, diatoms leave a large number of remains of cell wall in their habitat. Okay. Next question is, what do algal bloom and red tide indicate? तो इसका आंसर लिखिएगा, फर्स्ट इज algal bloom. Algal bloom, that is cyanobacteria, which is also called blue-green algae. Its example is nostoc, Anabaena, etc. Their colony is usually covered with a jelly-like cover which starts flourishing in floated water, which is called algal bloom. And second is red tide. Red color pigment are found in the shell of some dinoflagellate. They divide rapidly, due to which a red color layer is formed on the sea water. This is called red tide. Next question है, how are viroids different from viruses? तो इसका आंसर लिखिए, only the coil of naked RNA is found in the viroids. There is a lack of protein cover. The molecular weight of RNA of viroid is low. Next question is, briefly describe the four major group of protozoa. इसका आंसर लिखिएगा, protozoa are divided into the following four group. First is amoeboid protozoa. It is found in fresh water, sea and moist land, and catches prey with the help of pseudopodia. It is both parasitic and free living, for example amoebia and entomoebia. Next is flagellated protozoa. It is also both free living and parasitic. Flagella are found on their body, for example Euglena and Trypanosoma. Next is ciliated protozoa. Cilia are found in their entire body. Due to this, there is movement in the body. Example is Paramecium. And fourth is Sporozoa. It is generally parasitic in their life cycle.
A spore-like stage capable of infection is found. For example, Plasmodium, malaria parasite, Babesia, etc. Next question is, plants are autotrophic. Name some plants which are heterotrophic. That एग्जाम्पल बताना है हेटरोट्रोपिक प्लांट का. तो हेटरोट्रोपिक प्लांट इज फंगी, अमरबेल, कैस्कुटा, etc. Next question is, what do the word algal part and fungal part indicate? आंसर लिखिएगा कि जैसे एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं हम लोग लाइकेन, जिसमें द कंपोनेंट ऑफ एल्गी जो कि दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक एल्गी से और एक फंगस से. तो द कंपोनेंट ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गल पार्ट एंड द कंपोनेंट ऑफ फंगस इज कॉल्ड फंगल पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इग्लिनोइड. इसका आंसर लिखिए. It has proteinaceous pellicle in place of cell wall, and second is it has two flagella, one small and one large. Third is in presence of sunlight it photosynthesis, but in the absence of sunlight it behaves like a host by preying on microorganism. Next question है, give a brief description of viruses in terms of structure and nature of genetic material. Also write the names of 4 disease caused by viruses. तो इसका आंसर लिखिए. brief description of viruses based on structure and nature of genetic material. First is brief description of viruses. फर्स्ट में बात करेंगे हम स्ट्रक्चर के आधार पर. तो viruses are acellular microorganisms. They are made up of only a protein cell capsid and genetic material. Some viruses also have an additional membrane that is lipid cover outside, such as HIV. और बात करें जेनेटिक मटेरियल की, सेकेंड इस जेनेटिक मटेरियल के आधार पर बात करें तो वायरसेस कंटेन इधर DNA और RNA जेनेटिक मटेरियल और नॉट बोथ. DNA viruses example is smallpox virus. RNA viruses example is HIV influenza virus. And this genetic material is protected inside the body, inside the capsid. थर्ड बात करें तो वह both living and non-living characteristics. Viruses are like non-living object until they come in contact with a living cell. As soon they enter a host cell, they start replicating. और बात करें तो नेम ऑफ 4 मेजर डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस. फर्स्ट वायरसेस ब्रोन डिजीज, दैट मीन्स फर्स्ट इज पोलियो. ये होता है पोलियो वायरस. RNA वायरस एक प्रकार का. एड्स HIV के कारण होता है. ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. थर्ड इज डेंगू, ये भी वायरस से होने वाला रोग है. फोर्थ इज हेपेटाइटिस B, ये भी DNA वायरसेस है. ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 12 क्वेश्चन. और 11th क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 से. ठीक है, तो इसको लिख कर याद कर लीजिए. तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बाय, टेक केयर, अच्छे से रहें.